Hello everyone, welcome to the CommerceAchiever platform. With today's session, we are going to solve advanced question of fund flow statement asked in many examination because they want to check you whether actually there is a fund flow or not. तो आज के सेशन में हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल को करने जाएंगे. एडवांस क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको स्पेसिफिकली डिस्कस करें क्योंकि कई बार फंड का फ्लो होता ही नहीं है, ऐसे ट्रांजैक्शंस हमें देखने को मिलते हैं. तो इस एडवांस क्वेश्चन को हम साथ में सॉल्व करेंगे, दोनों लैंग्वेज में डिस्कशन होगी, हिंदी और इंग्लिश. तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, चाहे आप इंग्लिश में अंडरस्टैंड करते हो या हिंदी में, हम दोनों ही लैंग्वेज में कवर अप करेंगे. सो विद टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू कवर इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश द एडवांस क्वेश्चन ऑन द फंड फ्लो statement. So you people are most welcome to the Commerce Achiever platform. With the time we cover more numerical on commerce and accountancy, and I try to share as much as possible knowledge with you, and it will be great help if it will be a two-way communication. So try to learn, and if you are an initial learner, try to learn with us, and if you are an experienced learner, you have a challenge. Solve these numerical before me and get cross check at the end of the session. You can also manage your timing, improve your speed as much as fast as you can to solve these kind of numerical. तो आज के सेशन में आप अगर एक इनिशियल लर्नर हैं तो आप हमारे साथ सीख सकते हैं कि हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर आप एक एक्सपीरियंस लर्नर हैं तो आप इसको एक चैलेंज के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और एंड ऑफ द सेशन में आप इसे चेक करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं. सेशन के दौरान में कई बातें मैं एज अ वैल्यू इनपुट बताती रहती हूँ बीच बीच में, तो माइट भी वो भी आपके लिए वैल्यू एडिशंस हो, तो उनको भी आप अपने साथ नोट कर लिया करें, ठीक है. और अगर आप चाहें तो आप अपनी टाइम मैनेजमेंट यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, कितने स्पीड में आप न्यूमेरिकल को कर पा रहे हैं वो भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, फंड फ्लो स्टेटमेंट. ओके, so we have a question in front of one. Prepare a statement showing changes in working capital along with fund flow statement. So we are required to prepare two things: statement of changes in working capital and fund flow statement. Okay, we have different information with us. We have a current asset, investment, land, plant and machinery, accumulated depreciation and patents. We have total assets, and we have total liabilities, current liabilities, 12% debentures, 14% debentures, equity share capital, reserve for future loss on investment, retained earning, and total liabilities and capital. Additional information we have with us: a reconciliation of the balance and retained earning is given to us. Beginning balance is 68,200, net income from current year 3,000, award received for settlement of patent infringement case 15,600, dividends paid, because it's a paid because it's the word has been not been used, but it given in the negative 15,000, that means a paid, and the closing balance we have 71,800. It is very important for you people to understand the demand of question. Point number 2, the additional point 2, we can just highlight whatever we are gathering from here. So net income of the current year include a loss of 4,800, which is on sale of part of the plant. It is related to the plant, and the plant was rupees 19,000 at the beginning of year, and accumulated depreciation was 6,000. Then we have a third information related to the investment of rupees 15,000, which was sold during the year at a loss. The loss was charged to the reserve for future loss on investment and did not appear in the income statement. Next, we have information related to the debentures. During the current year, the 12% debenture were called for redemption. Most of them were refunded through the issuance of 14% debenture. It's a big catch, and we'll discuss in very detail. And the rest were retired for cash. Last one, the equity shares. So that is related to equity shares, which is issued in exchange of machinery, and the rest of plant and machinery were purchased for cash. So this question is very advanced question, and we will solve together. Okay, give me a moment to quickly conclude in the other language. आपके पास फंड फ्लो स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन है, और रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो है उनको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कर दी गई है, और अगर आपको जो है पीडीएफ नहीं मिली है तो आप टीम को अप्रोच करेंगे, ठीक है. आप जस्ट सिंपली टेक्स्ट करेंगे और वो आपकी हेल्प कर देंगे. एटलीस्ट मिनिमम 24 आवर्स का आप सपोर्ट टाइम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. सो आपके पास फंड फ्लो स्टेटमेंट, आप जो क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट दोनों प्रिपेयर करना है. करंट टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी की आपको डिटेल दी गई है. हमारे पास 5 एडिशनल इन्फॉर्मेशन है.
पहली जो है वो रिटेन अर्निंग की रिकॉन्सिलेशन है। उसके बाद हमें सेकंड जो है बताया गया है कि भाई जो नेट इनकम है उसमें एक प्लांट, पार्ट ऑफ द प्लांट है ना, उसे सेल किया गया था जिसमें लॉस था 4800 का, वो उसमें इंक्लूडेड है। और प्लांट जो है उसकी वैल्यू 19,000 थी शुरुआती में, और उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो दिया गया वो 6,000 का था। थर्ड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। मेंशन है कि 15,000 की इन्वेस्टमेंट सेल की गई है लेकिन लॉस पे, ठीक है, और लॉस जो है वो फ्यूचर लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट पे चार्ज किया गया है, लेकिन आपके इनकम स्टेटमेंट में उसे नहीं दिखाया गया है, उसे रिजर्व माना गया है। फोर्थ में आपको बताया गया कि जो 12% डिबेंचर है उसे रिडम्पशन के लिए बुलाया है, और 12% के रिडम्पशन को जो है वो रिफंड किया गया है कुछ अमाउंट को। 14% डिबेंचर यानी कोई फंड का मूवमेंट नहीं हो रहा, अगर आप देखें तो 12% के प्रति 14% का डिबेंचर इशू कर दिया गया है, और बैलेंस को जो है वो कैश में दिया गया है। तो जो जो एक्सचेंज हो रहा है ना वो फंड का कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा। और फिफ्थ पॉइंट है आपका इक्विटी शेयर्स का, जो इशू हो रहा है एक्सचेंज ऑफ मशीनरी में, ये भी एक्सचेंज हो रहा है, और रेस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो है वो कैश में परचेज की जाएगी। तो आपने देखा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। सो हम हर एक न्यूमेरिकल में ना कुछ नई चीजें सीखेंगे, ठीक है। सो विथ एवरी न्यूमेरिकल विल ट्राई टू लर्न डिफरेंट थिंग्स। सो and with this session I will request you to analyze what do you think, how many question you should do before sitting in an exam. A very important question I want to ask from you people. What do you think, how many question you should do for in case of a numerical before sitting any of the exam? Okay, do let me know. Okay, so let's start with the solution. Okay, so the demand of question is the statement of changes in working capital. Changes in working capital, and I hope you people remember the format. And if you didn't refer your last session, every session have some value added information, so don't miss any of these session. So we have a particulars, previous year, current year, effect on working capital. Okay, there's a some space thing, so please take care of that. Increase, decrease. So this is in rupees. Okay, so format is very important. Few student ask in between that, ma'am, is it required to prepare a format every time? Yes. So working capital, every time we learned how to draw with the working capital is to start with the current assets. So first we have current asset. To go with the current asset, it is very important to check whether you have any additional information related to the current asset and current liability. So far we don't have anything. Okay, so let's check current asset. We have a straight away 1,35,000 and 127,200. So there is no individual bifurcation in this question. So 127,200. I hope you people referred the last session. So we discussed already the conceptual how it can increase or decrease your fund. So I'm not going to take them individually now. Current liabilities. I don't want you people to memorize. If you didn't watch the last sessions, please watch that to understand whether it's going to affect on working capital is an increase or decrease. So next we have a current liability, and we don't have any additional information with the current liability. Then we go to the balance sheet and check 24,600 and 34,800. Straight away 24,600 and 34,800. Working capital 1 minus 2, 1 lakh 10,400, 92,400. So you can see it is a decrease. Net decrease in
working capital. Please do the total. Okay. If you don't understand, you won't able to understand why I put this amount here. I request you, please don't think to memorize this. Watch the last session. ओके, काइंडली गिव मी अ मोमेंट क्विकली टू कंक्लूड इन अदर लैंग्वेज. तो आपके क्वेश्चन की जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वो है आपका स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल के लिए रूल पहला मैं यही बताती हूँ कि आपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी देखना है. करंट एसेट या करंट लायबिलिटी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. तो पहले अगर हम करंट एसेट देख रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि भाई हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली है. अगर मिली है तो ध्यान देंगे, नहीं तो सीधे जंप करेंगे बैलेंस शीट पे. बैलेंस शीट में इस क्वेश्चन में हमें करंट एसेट टोटल ही दिया है, कई बार अलग अलग दिया जाता है. लास्ट सेशंस में हमने देखा है, हमने अलग अलग उसे डिस्कस किया है. तो करंट एसेट आपका 135, 127, 200 है और करंट लायबिलिटी 24,600 एंड 34,800 डायरेक्टली गिवन है. डायरेक्टली उसे हमने लिख लिया है, इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट दिखा दिया है. और वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे 1 - 2. अगर आपको इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है फंड, ये क्लियर नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लास्ट सेशंस को देखेंगे, याद नहीं करेंगे कुछ भी, वरना आपका हमारे साथ इस सेशंस में जुड़ने का कोई फायदा नहीं रहेगा. ठीक है, तो अगर आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है तो सेशंस को आपको साइमल्टेनियसली देखने होंगे. ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आपने निकाल लिया, 1,10,400 और 92,400. ये फॉर्मेट है, ये फिक्स फॉर्मेट है आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. तो हम देख रहे हैं 1,10,400 से घट के वो 92,400 है, यानी डिक्रीज हुआ है आपका वर्किंग कैपिटल 18,000 से. तो आपने करंट ईयर में 18,000 किया और टोटल आपने कैलकुलेट कर दिया. आपका ये हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट जो है आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपने जो है स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड फंड यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. तो चलिए हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं. फंड फ्लो statement. We have sources. Sometimes fund flow statement is also called as an statement of source and application. So don't get confused with that. Okay. So we have a statement, fund flow statement, and just next we need a working note. Okay. So let's start with the working note. In working note, let's prepare a statement for adjusted P&L because this is the most thing we require to prepare. Profit and loss account. It's not a demand of question. That's why we are preparing into the working note. Okay. Yes, formats are important. I already told you in the last sessions, formats are important. So adjusted P&L we have, let's check the adjusted P&L balance. We have 68,200 the beginning balance and we have a closing balance of 71,800. So please transfer that adjusted balance by balance brought down. We have 68,200 and I'm leaving some space to balance carried down 71,800, right? Okay. Okay. So just we transferred the balance. Then we have a next working, we have a net income of the current year which includes a loss of 4,800 of related to a plant. So there is a loss. So loss will be here on the debit side to loss on
sale of plant 4800. Then we require to prepare a plant ledger. Hope you understand. We are required to prepare the plant ledger. Format is very important. Please don't think to compromise with that. Okay. So let's bring down the balances standing in the plant account. So we have a plant and machinery account. You can see 81,000 and 1,05,000. Let's prepare a 81,000 and 1,05,000 to balance brought down 81,000 and by balance carried down 1,05,000. And we can also see there is a accumulated depreciation. All are correlated. So when the things are correlated, try to prepare simultaneously. Okay. Particulars, amount in rupees, particulars, amount in rupees. Here's a debit and the credit. So let's bring down the balances standing into the accumulated depreciation account. So we can see 24,000 and 26,000 given in the balance sheet, 24,000 and 26,000 accumulated depreciation. So by balance carried down 24,000 and to balance brought down 26,000. Okay, now let's go to the adjustment related to the plant and machinery. Okay, so the plant was 19,000 at the beginning of the year and accumulated depreciation on that particular plant is given to us is 6,000. If you can see, we have a accumulated depreciation is on 6,000. So let's mark it plant laser. We can charge it by accumulated depreciation 6,000 on that particular plant. Okay, and we have a loss also. How much? 4,800 by adjusted P&L 4,800. Okay, and what else we have? So if you can see, the plant was of rupees 19,000, accumulated depreciation was 6,000. That means it left with 13,000 and it sold for 4,800. Okay, so that means, kindly give me a moment. So plant at beginning, that particular plant which is on the sale, that is for 1 second, 19,000. Can you give me a moment? Yes, 19,000 at the beginning, sold for loss. So beginning 19,000 less accumulated depreciation was 6,000. Okay, depreciation was 6,000, right? Left with 13,000 was WDV. It sold for something, we don't know that, but sold at a loss, of 4,800. 4,800. So what will be the amount here? It will be, because the WDV
was 13,000. That means the book value which is bring down was 13,000. So it sold at 8,200. So that's why there is a loss of 4,800. Hope you gather how we get this 8,200. It's very important for you people to think of step ahead. So hope you got this 8,200. So we can write it by cash sale, by sale cash 8,200, and transfer it as a source and application. Okay. To sale of plant 8,200. Okay. Anything else we have related to the plant and machinery? Let's go check. We did with the point number 2. Hope you people clear. Okay. Next we have investment debenture. No, okay. The fifth point we have that equity share were issued in exchange of machinery. So let's see now the time to take the picture of equity share. And equity share we have from 90,000 it increases to 1 lakh. That means for 10,000 there is a plant, use a plant. So now in case of plant laser we have a share capital for 10,000, and question said that balance will be in the cash or bank, whatever will be the balance. So please calculate that. It will be 33,000. So on cash purchase of plant 33,000. Hope you satisfied. And we have share capital, sorry, we have share capital account. Everything is very important to show as a working note because it put a good impression on the examiner. Particulars, amounts. Okay, kindly transfer your balances from the balance sheet, sorry. So we have in the balance sheet equity share capital is 90,000 to 1 lakh. 90,000 to 1 lakh, and we have a plant. By to balance. Okay, we can close this ledger easily, and we already transferred this 10,000 to the plant account. Already we did the 10,000. So we can close our equity share capital, and with this we have closed our adjustment number 5. Okay, adjustment number 5 is closed. Now move ahead with an additional depreciation. In the accumulated depreciation, we transferred our opening and closing balance. Okay, and here we also need to transfer our plant and machinery account 6,000. This 6,000 accumulated depreciation need to be transferred to the depreciation account, and balance, we'll find the balance then by adjusted P&L account. So please find the balance 32 to 8,000. 8,000. Now this 8,000 you can transfer to the adjusted profit and loss account. To depreciation 8,000. Hope you people satisfied. We close these items. Okay. Now just go with the, we showed our sale and purchase of plant. Okay. Sale and purchase of plant is already shown. There is nothing to show from accumulated depreciation and nothing to show from share capital. Why? Because share capital, the difference has been adjusted through the exchange of plant. There is no cash or bank balance, no movement of fund.
Okay, now move ahead with the next adjustment on investment. Investment of 15,000 were sold during the year at a loss and the loss was charged to the reserve. So let's time to prepare a investment ledger. Investment account. So in the investment account, again you are required to prepare the statement, particulars, amount, particulars, amount, debit and credit. Kindly bring down the balances from the balance sheet. Investment we have 15,000 and 21,400. Okay, investment 15,000 and 24,000. So to balance carried down 15,000 by balance brought down 21,400. And then we have that it is sold at a loss and which is charged to the reserve, not to an accumulated profit. Point number 3, investment of 15,000 were sold at loss which was charged to the reserve for future loss. So let's see what is a reserve for future loss. We showed that. Okay, reserve for future loss we have 6,000 and 3,600 as a balance. So what is the difference is 2,400, you can see. So that is a 2,400 is a loss. Investment account by reserve for future loss 2,400 straight away. I hope you people can easily calculate that. Okay, again then we have an information that it is investment. We have additional information number 5, no 4, third, sorry. Investment of 15,000 were sold. So the value of investment which is sold was 15,000. So investment value which was sold was 15,000, but there is a sale of something, but there is a loss. How much the loss is? 2,400 we can see. So please find the difference figure. 12,600. Hope you satisfied. That means we have an investment value of 15,000. We sold it for 12,600. So that's why we incurred some loss. That is a 2,400. So you can mark it as a sale 12,600. Hope you people satisfied. So by cash, sale, how much? 12,600. Transfer this as a source and application. So source, okay, to sale of investment 12,600. Clear? Now we can also close this ledger now. Investment ledger. Please close this ledger. We have 36,400. To cash or bank. Marked as a purchase. The difference figure 21,400. Okay. Hope you satisfy. We transfer this cash purchase. So purchase of investment 21,400. Hope you people satisfied. Okay, we will discuss in other language also. Please cooperate and we will conclude in the other language also. So we're done with the adjustment number 3, and in the balance sheet we're done with the reserve for losses. We're done with the investment. Now switch to the debentures. So we have a debenture of 12% in the last year 43,400. In current year we have 39,000, right? But what the question says that during the current year 12% debenture were called for redemption and most of them were refunded through the issuance of 14% debentures. However, rest were retired for cash. So we have a debenture. Let's see, we have a 12% debenture. So redemption of debenture of 12% in exchange of 14% debenture.
That means for 39,000, it's not a fund movement. So there is a no fund movement with the 39,000. You can see there is no fund movement with the 39 because it's for exchange. The difference will take as a purchase. So difference will be taken as a like redemption of debenture as a difference. So application, fund flow statement, redemption of debenture. Hope you people satisfied. So 43,400 for which we purchased and 39,000 we exchanged. Difference will be 4,400. Hope you people satisfied with this. Okay. So let's now transfer your net decrease in working capital. Time to transfer the things now because we end up with all the adjustment. Net decrease in working capital by 18,000. Decrease, that means net decrease by 18,000. Okay, I'm writing shortcut, please avoid that. We have let's check the adjusted P&L. We already closed our investment ledger. Yes, we did that. Okay, so let's close now adjusted P&L account. So we shown the loss on sale of plant rupees 4,800. We shown the depreciation. We have information about dividend. You can check here, 15,000 dividend paid. Okay, 15,000 dividend paid that need to be paid, and we have award received for the settlement 15,600 that also need to be disclosed. Your adjusted P&L to dividend. Okay, dividend that need to be paid, it's an adjustment. How much? 15,000 was dividend. Source or application dividend. Paid is application. Dividend paid. Dual entry is over. 15,000 satisfy, and we have a award received. So award received will be your credit by award received. We received an award of rupees 15,600. Give me a moment to connect you with the detail. We did this. Okay, so award received for 15,600. This is also your source. Dual entry, na? We need to pass the dual entry. Award received. How much? 15,600. Okay, so we pass these entries. Now all the adjustment is over. We can if check. We have a beginning balance, we have award received, we have dividend, and we did everything with the adjustment. So adjustment one is also over. Okay, now switch to the balance sheet. We did with the current asset, investment did. Land is equal 9,000, 9,000, no entry need to be made. Plant and machinery done. Accumulated depreciation done. Next we lived with the patent. So patent is need to be write off from 16,200 to 12,600. Okay, so we can write off the patent to the adjustment P&L to patent write off difference figure 3,600. Satisfy? Quickly. Done with the total assets. We have current liabilities, we done with that. Debentures over. Equity share capital done. Reserve done. Okay, and retained earning is your adjusted with your P&L statement because retained earning is related to your additional information one. So we can close our adjusted P&L account. Please calculate the difference. So we have Y fund from operation 19,400. Please transfer this 19,400 to your source and application ledger. Please check we have shown every item and close the ledger of your source and application.
it will be your 73,800. Try to fast up your calculators. Okay, for 73,800 is a total of fund flow statement. So kindly give me a quick moment to conclude in other language so that we can help the other aspirant. So हमने अभी तक बना लिया था वर्किंग कैपिटल चेंजेस का. उसके बाद क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो थी फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिसको हम सोर्स एंड एप्लीकेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं. तो सोर्स एंड एप्लीकेशन स्टेटमेंट को हमने एज अ फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया, सोर्स एंड एप्लीकेशन. अब हम क्या करेंगे, एक एक एंट्रीज को उठाएंगे और वर्किंग नोट पे हम सबसे पहले बनाएंगे हमारा एडजस्टेड P&L अकाउंट. क्यों? क्योंकि अब ये क्वेश्चन की मेन क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, इसलिए हम इसे वर्किंग नोट का पार्ट बनाएंगे. ठीक है, वर्किंग नोट का पार्ट बनाने के लिए उसके बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका बैलेंस ट्रांसफर कर लेना है एडजस्टेड P&L का बाई बैलेंस एंड टू बैलेंस. 68,200 71,800 ये हमारे पास जो है एडजस्टमेंट नंबर 1 में इंफॉर्मेशन है. 68,200 अगर आप देख सकते हो और 71,800 बैलेंस ट्रांसफर करना है. उसके बाद आपको गिवन है नेट इंक्रीज कितना हुआ, तो इन सब से भी मतलब नहीं है. जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो एक है आपकी ये वाली जो सेटलमेंट में पैसे मिले हैं, और दूसरा डिविडेंड आपने जो पे किए थे उसको हम लास्ट में डील करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जो प्लांट से रिलेटेड है. आपने देखा कि भाई जो नेट इनकम है करंट ईयर की वो 4,800 है, वो पार्ट ऑफ द प्लांट को सेल की गई थी, वो उसमें नेट इनकम में इंक्लूड है. ठीक है, लेकिन प्लांट जो था वो 19,000 का था और उस पर डेप्रिसिएशन था 6,000 का. ध्यान देंगे, प्लांट का लेजर बनाएंगे. ठीक है, प्लांट का बैलेंस आपने लिया है बैलेंस शीट से, बैलेंस ब्रॉट डाउन 81,000, बैलेंस कैरी डाउन 1,05,000. बैलेंस शीट से बैलेंस लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, प्लांट की जो वैल्यू थी वो 19,000 थी. ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन दिया 6,000. अब WDV क्या आ गई, गिर के 13,000 हो गई. उसे 100 लॉस पे सेल किया गया, यानी 4,800 लॉस था, तो सेल कितने पे किया वो भी निकल आएगा, तो वो आ जाता है आपका 8,200. आई होप आप सारी चीजें अंडरस्टैंड करो और कुछ भी याद ना कर रहे हो. ठीक है, अब ये सारे अमाउंट्स को हम रिस्पेक्टिव लेजर्स में ट्रांसफर कर देंगे. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी हमारे पास बैलेंस है बैलेंस शीट में, वो भी हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया 24,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया आपने 26,000. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 6,000 का, टू प्लांट एंड मशीनरी करके आपने 6,000 ये ट्रांसफर कर दिए. 6,000 ये आपने ट्रांसफर कर दिए. ठीक है, और आपने ये प्लांट और मशीनरी अकाउंट में भी 6,000 ट्रांसफर कर दिए. प्लस आपको जो लॉस हुआ 4,800 आपने वो भी ट्रांसफर किया, और आपने कैश में सेल किया था, कैलकुलेट किया आपने 8,200, आपने वो भी ट्रांसफर कर दिया. कैलकुलेट किया था ना ये 8,200, तो ये आइटम्स आपके ट्रांसफर हो गए सारे. ठीक है, अब इसमें जो बैलेंसिंग बचा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 8,000, ये आप बैलेंस को ट्रांसफर कर दोगे आपके एडजस्टेड P&L में. ठीक है, एडजस्टेड P&L में 8,000 ये ट्रांसफर किया. प्लांट का लॉस था वो भी आपने 4,800 ट्रांसफर किया. ठीक है, उसके बाद आपने एक एडजस्टमेंट और है हमारी प्लांट और मशीनरी से रिलेटेड, एडजस्टमेंट नंबर 5, जहां पे ये बोला गया है कि इक्विटी शेयर को मशीनरी के एक्सचेंज में दिया और बाकी जो प्लांट एंड मशीनरी उसे कैश में परचेज किया जाएगा. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अगर हम चल के देख लें तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा 90,000 से बढ़ के 1,00,000 हो गया, यानी 10,000 का इक्विटी शेयर है. इसका भी क्विकली लेजर बना लेंगे हम. इक्विटी शेयर कैपिटल का आपने बैलेंस लिया 90,000 और 1,00,000, डिफरेंस आपका प्लांट है 10,000, ये प्लांट के लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा. There was some technical error. I hope now you people can watch this plant account. Okay, let's start. So हमने accumulated depreciation क्लोज किया. ठीक है, और शेयर कैपिटल हमारा क्लोज हो गया 10,000, ये ट्रांसफर हो गया. और जो प्लांट की हमारी सेल और परचेज की वैल्यू आई थी 33,000 और 82, इसको हमने एज ए सोर्स एंड एप्लीकेशन जो भी आपका रिस्पेक्टिव है उन्हें ट्रांसफर कर देंगे. सेल ऑफ प्लांट 82 एंड परचेज ऑफ प्लांट 33,000. ऐसे प्लांट का लेजर आपका क्लोज हो जाता है. क्लियर. उसके बाद हम चलते हैं, हमारे प्लांट की एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल क्लोज हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोज हो गया. 3 लेजर इस एंट्रीज के थ्रू क्लोज हो गया. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट्स की ओर. इन्वेस्टमेंट में बोला गया कि 15,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी. एडजस्टमेंट नंबर 3 आप देख सकते हैं, 15,000 वैल्यू थी जिसे लॉस पे सेल किया, लेकिन वो लॉस जो है आपने एज अ P&L नहीं ट्रांसफर करके रिजर्व में ट्रांसफर किया है. ठीक है, तो देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट का हम लेजर ट्रांसफर कर लेंगे, और आपका जो अमाउंट था रिजर्व फॉर फ्यूचर लॉस वो कितना है, 6,000 से घट के 3,600 हो गया. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का लेजर बना लेंगे क्विकली. प्लांट हमारा ओवर हो चुका है. ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया है और इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो गया है.
इन्वेस्टमेंट का लेजर ले आए हम, बैलेंस कैरीड डाउन एंड ब्रॉट डाउन ले आए, ठीक है। अब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 15,000, जिसे लॉस में सेल किया गया और उस लॉस को रिजर्व में ट्रांसफर किया गया। तो डिफरेंस जो था वो रिजर्व का वो था 2400 रुपए, यानी लॉस हुआ 2400 का, वैल्यू थी 15,000 की, तो सेल कितने पे हुआ? ये आपका डिफरेंस फिगर आ जाएगा 12,600। 12,600 आप कैश सेल दिखा देंगे अपने लेजर में और लॉस दिखा देंगे रिजर्व से 2400। डिफरेंस जो आ गया आपका परचेज आ गया। अब ये कैश सेल और कैश परचेज ये दोनों आपने सोर्स एंड एप्लीकेशन फंड में ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। और रिजर्व जो है आपका वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा एडजस्टेड पीएनएल में। नहीं, वो तो आपने ऑलरेडी जो है लेजर से दिखाई दिया है, सिर्फ लॉस ट्रांसफर होगा, ठीक है। सोर्स एंड एप्लीकेशन में आपने सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट ओवर हो गया। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट है हमारा डेप्रिसिएशन का। 12% का जो डेप्रिसिएशन है उसके अगेंस्ट में 14% का डेप्रिसिएशन इशू किया और डिफरेंस को कैश में। तो जो एक्सचेंज में हुआ वो कोई फंड का मूवमेंट नहीं है, तो जो डिफरेंस है उसको रिडम्पशन में दे लेंगे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपका 4,400 से हो जाता है। अब हम सारे लेजर्स को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन हमारा पहले एंट्री में दो आइटम रह रहे हैं। एक अवार्ड रिसीव हुआ है 15,600 का और एक डिविडेंड पे किया है 15,000 का। सोर्स एंड एप्लीकेशन में पास कर देंगे रिस्पेक्टिवली। आपने दिखा दिया डिविडेंड पे 15,000 और अवार्ड आपको रिसीव्ड हुआ 15,600। ये आपके एडजस्टेड पीएनएल में चला जाएगा। डिविडेंड आपका 15,000 और अवार्ड रिसीव्ड हुआ 15,600। एडजस्टमेंट सारी हो गई। बैलेंस शीट में देख लेते हैं कोई आइटम बच तो नहीं रहा। करंट एसेट हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, लैंड में कुछ नहीं होगा क्योंकि 9,000 और 9,000 दोनों बैलेंस सेम है। प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुका है, बचता है पेटेंट। तो पेटेंट को हम राइट ऑफ करेंगे और एक्यूमुलेटेड पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे 16,200 से 12,600। तो पेटेंट आपका एडजस्टेड पीएनएल में चला गया 3,600। सारे आइटम हो गए। आप प्लीज क्लोज करेंगे एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट को। बैलेंस आएगा 19,400। इस 19,400 को हम आपके जो है सोर्सेस में ट्रांसफर कर देंगे, सोर्स एप्लीकेशन फंड फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। और देख लेते हैं लाइबिलिटी साइड में कुछ बच तो नहीं रहा। करंट लाइबिलिटी हो चुकी है, डिबेंचर्स हो चुके हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया है, रिजर्व फॉर फ्यूचर लॉस हो चुका है और आपकी रिटेन अर्निंग का तो पहला ही था रिकांसिलेशन, वो पहला ही आपका रिटेन अर्निंग का था। तो सारी चीजें हो जाती हैं। नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को भी आप ट्रांसफर कर लेंगे 18,000 से। आपको ये आपने नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सोर्स में ट्रांसफर कर दिया। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्लोज करेंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा 73,800 बोथ साइड। तो आई होप आपको इस सेशन में भी कुछ वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो। और कई बार कुछ ऐसे एस्पिरेंट का रिव्यू मुझे मिला है और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट ये करूंगी कि आप अपने रिव्यूज देते रहें ताकि हम मैक्सिमम स्टूडेंट का सपोर्ट कर सकें। और हो सकता है कोई चीजें जो इंक्लूसिव नहीं हो अब तक, आपके रिव्यूज से हम उसे आगे एनालिसिस के बाद इंक्लूड कर पाए। तो स्टूडेंट ने ये बोला कि मैम जब आप दोनों लैंग्वेज में कराती है तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि मैं इंग्लिश मीडियम में हूँ, मैं समझता हूँ इंग्लिश में, उसके बाद आप जैसे हिंदी में कराते हैं तो मैं तुरंत उससे रिवीजन कर लेता हूँ, तो मेरे को मल्टीपल रिवीजन हो जाता है एक ही सेशन में। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि ये इनिशिएटिव उन्हें हेल्प कर रहा है। आपको क्या ऐसे इनिशिएटिव में हेल्प मिलती है तो आप अपने व्यूज से, और अगर अब तक आप ऐसे हेल्प नहीं ले रहे थे तो आप इसे हेल्प लेना शुरू कर दें। मैक्सिमम बेनिफिट आपको ही निकालना है इन सब सेशन से कि आप इन सेशन से कैसे अपने आप को मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको रोड मैप देंगे, रोड पे आपको चलना होगा, ठीक है। सो आई होप आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इवन अ लिटिल बिट फ्रॉम दिस सेशन। If really it gives you a 0.1% of the value addition, don't forget to like it. Do share your valuable comments because it is very important to know the reviews, actually what students are getting from this session, because it helps us to help you as much as possible if we get the reviews from your side. So stay connected. We'll bring up more on commerce and accountancy. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.